एंड प्रॉपर वाले पंजाबी मिलेंगे, दोस्त कुर्ता पजामा एंड जुस्सा वाले। दिस इज द डाउनटाउन एरिया। देखो इतने कैफेज वगैरह ने, बेकरीज ने, ये देखो कितनी सही बिल्डिंग है। ये we are at Boreval. We are crossing the Peace Bridge. ऐसे एरिया को तो आप 24 घंटे भी देखो तो आप बोर नहीं होगे। तो सामने लोग कहाँ पे पहुँचे हैं अभी, वो प्रॉपर आगे थे, पूरी आइस पे थे वो। ये नाउ वी आर मूविंग बैक, हम वापस जा रहे हैं पीस ब्रिज से। We are here at downtown area. This is Bow College. Yeah, this is Bow College. And this is the City Hall station. Doors normally open on the right. This is a westbound train. Destination 69th Street. Ashrat Singh so गए हैं. He's super tired today. Here's University of Calgary. University of Calgary. This is Civil War. The next stop is First Street West Station. Welcome to the TD Repair Zone. यहाँ पे अमन के फ्रेंड रहते हैं। यहाँ पे कोई सोसाइटी है उसमें। Enjoy the view of Calgary from the transit. First Street West Station. Doors normally open on the right. Street West Station. Customers traveling to the northwest must disembark at this station. देखो कुर्ते पजामे वाले अंकल, मतलब चाहे पंजाबीज एवरीवेयर मिलेंगे कैलगरी, एंड प्रॉपर वाले पंजाबी मिलेंगे, दोस्त कुर्ता पजामा एंड जुस्सा वाले। हो गई हमारी ट्रेन जिसमें हम आए थे, एंड अब हम जा रहे हैं द पीस ब्रिज, द आइकॉनिक पीस ब्रिज। ये देखो डाउनटाउन की वाइब, colorful wall. This is the downtown area. Oh देखो कितना beautiful area, like building है वो वाली। Yes, here's our turn to cross. सारी रोड्स खाली हुई पई हैं, अदरवाइज इट्स बहुत रशी एरिया, just because it's a long weekend, Easter, तब करके roads are empty. This arrow is उल्टा, हमारे फ़ोन में ना GPS पता नहीं क्यों arrow वो दूसरी साइड दिखा रहा है, तो we got confused कि हमने पीस ब्रिज किस साइड से जाना है। सी ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, यहाँ पे ना कुछ बिल्डिंग्स हैं जो प्रॉपर कंक्रीट की बनी हुई हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ लकड़ी।
सब वुड का बना हुआ है. कौन सी ग्लास की है? हाँ, that building is made up of glass. मतलब like more of glass. Oh, here's the men's saloon. Maybe I missed that. वो नहीं आएगा ऑफिस में. एंड इससे पीछे तो कोर्ट थी. अब ये पता नहीं क्या है यहाँ पे. वो इनकी सेंटर में बिल्डिंग होगी. एंड देयर वो सामने आपको शॉ दिख रहा होगा. शॉ को रॉजर्स ने ओवरटेक कर लिया है. रॉजर्स ने बाय कर लिया है एंड वो मर्ज हो गए हैं. अरे बाय किया है. हाँ. Here's the blue bus. ये हमने फर्स्ट टाइम देखी यहाँ पे. सही है टेस्ला. टेस्ला की इंश्योरेंस ही $800-900 पर मंथ होगी. We are just waiting कि वहाँ पे वो चलने वाला बंदा बने so that we can cross. बटन सारे तोड़ ही देते हो इन्हें. पहले ना पॉपुलेशन कम होती थी, वॉकिंग वाले लोग कम होते थे, तो फिर वो कभी कभी इसको ऑन करना पड़ता था. तो अब इनको पता है कि हमें करना ही पड़ेगा, तो इन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम ही कर दिया इसका. There's the whiskey bar. सामने सही है. ये देखो इतने कैफेज वगैरह ने, बेकरीज ने. एंड दिस इज अ बिल्डिंग, residential area. That is also a residential area. वो भी residential area. सब बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है सब. डेंटल वाला डॉक्टर. ये देखो कितनी सही बिल्डिंग है. दिस इज अगेन अ कैफे हियर. एंड ये वो वाली बिल्डिंग विच आई वाज सेइंग बहुत सही है. हाँ, उनको भी बड़ी अच्छी लगी ये वाली बिल्डिंग. हाँ, लेट मी शो यू दूसरी साइड से. एक बारी ट्रीज को क्रॉस कर ले हम, फिर दिखाती हूँ मैं आपको. पैदल ही आंदे होंगे इतने. हाँ पैदल ही आ जाते होंगे. इधर सुखना लेक नहीं है. हाँ, तो उतना ही है. ये देखो कितनी सही बिल्डिंग है. एंड that's the Bow River and it is iconic Peace Bridge. ये देखो kids are doing skating and just enjoy कर रहे हो इधर. Wow, it's good, nice. अच्छी vibe है इत्थे दी in सुखना लेक types. जिसमें चंडीगढ़ सुखना लेक जाके खुशी दी होंदी है ना, that was my favorite place in Chandigarh. More or less always I used to say अमन चलो सुखना लेक चलते हैं, चलो सुखना लेक चलते हैं. अब I'll be after अमन चलो पीस ब्रिज चलते हैं, चलो पीस ब्रिज चलते हैं. Summers में तो स्पेशली. Wow, this is a good area. Nice. And this is the history.
at Bo River. This is the Peace Bridge, iconic Peace Bridge, and ये पीछे सारा डाउनटाउन एरिया है. Yay! We are crossing the Peace Bridge. ये बहुत ठंडे थे, बहुत ज़्यादा. हाँ, ऊपर से मैं जैकेट नहीं डाल के आई और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना. कल सारा दिन धूप निकली हुई थी, आज भी मॉर्निंग में धूप थी, तो आई वॉज लाइक मे बी वेदर नॉर्मली रहेगा, बट नहीं, आज तो ठंड होनी थी क्योंकि मैंने जैकेट नहीं डाली थी. मेरी बैक साइड पर देखो, दिस इज द कंप्लीट ब्रिज. आई जस्ट लव दिस एरिया, बहुत प्यारा है, बहुत सोहना है. बिल्डिंग्स भी है, नेचर भी है, मतलब एवरीथिंग. दिस इज फुल पार्क. ऐसे एरिया को तो आप 24 घंटे भी देखो तो आप बोर नहीं होगे. इस साइड से देखो, दिस इज द अनदर साइड ऑफ द पीस ब्रिज. ये हियर इज अमन एंड अर्श तो सो गया, सो हम एंजॉय कर रहे हैं. अगर वो जगह होती तो वो भी एंजॉय करते डेफिनेटली. एंड हियर इज एजे. एजे, say hi. Hello. He's looking smart in goggles now. I told him I'll show her. तो सामने लोग कहाँ पे पहुँचे हैं. अभी वो प्रॉपर आगे थे, पूरी आइस पे थे वो, एंड अभी वो पीछे गए हैं. मतलब they were so near to the bank of the river now, flowing river. And समर से पूरा एरिया लश ग्रीन हो जाता है. हाँ, नाउ विल हिट बैक, हम वापस जाएंगे. एंड ये देखो, नेचर, ब्यूटी, एवरीथिंग, पीस, सब कुछ है. along with a little bit of traffic. Now we are heading back. हम वापस जा रहे हैं. एंड दो मनते नहीं कर रहे हो, बट ठंड लग रही है. अगर मैं जैकेट लेके आई होती ना तो वी वुड हैव स्टेड हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बट अमन को भी ठंड लग रही है, तो हाँ, लास्ट टाइम अमन नहीं लेके आए थे जैकेट, इस बार मैं नहीं लेके आई हूँ जैकेट. कैलगरी में आपने घर से बाहर निकलना है तो आप जैकेट रख लो अपने साथ. मैंने तो यही सीखा आज. जस्ट बिकॉज यू नेवर नो कब वेदर चेंज हो जाए. शो यू द बेंच, मे बी आपको दिख रहा होगा कितनी पीसफुल प्लेस थे है. लोग कितना एंजॉय कर दो उनके ना. वाओ, लवली. बेंच मतलब दिस इज हेवन. आई गेस कैलगरी दी सब तो सोहनी जगह हैगी है, सबसे ब्यूटीफुल. वो देखो, हेजर इज लुकिंग फॉर दैट बाइक. देखते हैं अगर इस बाइक में लाइक सिंगापुर वाला सिस्टम हुआ फिर तो हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज हम घर से चिलर नहीं लेके आए, चेंज नहीं लेके आए. अगर अलग सिस्टम हुआ देन डेफिनेटली वी कैन यूज़, फिर हम यूज़ करेंगे. बिकॉज अभी आज तो अर्श भी सो रहा है. ये नाउ वी आर मूविंग बैक. हम वापस जा रहे हैं पीस ब्रिज से. एंड अब देखते हैं, अभी मैं देखती हूँ मेट्रो कितनी दूर है. जितने दूर से आए हम उतनी दूर ही होगी. अब देखते हैं. अच्छा, दिस इज नोन एज सी ट्रेन, दिस इज नॉट मेट्रो. देखिए, दिस इज सी ट्रेन नॉट मेट्रो. सी ट्रेन और LRT बोलते हैं इसे, मेट्रो नहीं बोलते.
वो दिल्ली वाले मेट्रो बोलते हैं। ये अमन के फ्रेंड की सोसाइटी है। पहले हम भी इसमें लेने वाले थे फ्लैट, बट फिर माय कज़न सजेस्टेड, जसदीप ने सजेस्ट किया कि नहीं, हमें डाउनटाउन में नहीं रहना चाहिए, डाउनटाउन सेफ नहीं होते हैं, सो दैट्स वाई हम नॉर्थ ईस्ट में चले गए थे। बट ठीक है, एंड डाउनटाउन हैज़ इट्स ओन वाइब, एंड वो वाला ओपन ओपन सा खुला सा एरिया, बड़े बड़े घर, तो that has its own pros and consequences. It's time to say goodbye to the Peace Bridge. We'll come again. आप सारे फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, and do share it with your friends. And please comment down how do you like my videos. Thank you. See you again. Bye bye. Take care.